स्कॉलर जिप्सी 1853 मैथ्यू अर्नोल्ड की एक कविता है जो यूसुफ ग्लेनविल के द वैनिटी ऑफ डॉगमैटिंग 1661 में पाया गया ऑक्सफोर्ड कहानी पर आधारित है। इसे अक्सर अर्नोल्ड की कविताओं का सबसे अच्छा और सबसे लोकप्रिय में से एक कहा जाता है। मूल कहानी। अर्नोल्ड ग्लेनविल जो एक गरीब ऑक्सफोर्ड छात्र जो जिप्सीज के एक बैंड में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दिया है की कहानी बताता है। से एक उद्धरण के साथ कविता प्रेफेसेस और इसलिए उनके साथ खुद को अनुत्तरित है कि वे उसे अपने व्यापार के रहस्यों में से कई बताया। कुछ समय बाद उन्हें अपने दो पूर्व ऑक्सफोर्ड सहयोगियों द्वारा खोजा और पहचाना गया, जिन्होंने उनसे सीखा कि गिप्सी उनके बीच एक पारंपरिक तरह की शिक्षा थी और कल्पना की शक्ति से चमत्कार कर सकती थी। उनकी फैंसी दूसरों की बाध्यकारी है। जब उसने सब कुछ सीखा था जो कि गिप्सी उसे सिखा सकती थी, तो उसने कहा वह उन्हें छोड़ देगा और दुनिया को इन रहस्यों का एक खाता देगा। सारांश। विद्वान जिप्सी के वक्ता चराई में एक सुंदर ग्रामीण सेटिंग का वर्णन करता है। ऑक्सफोर्ड के शहर दूरी में झूठ बोल रही है के साथ उन्होंने कहा कि चरवाहा और रीपर्स क्षेत्र के बीच काम कर रहे देखता है, और फिर चरवाहा है कि वह धूप से बाहर रहने के लिए दृश्यों का आनंद ले रहे और ऑक्सफोर्ड के टावरों का अध्ययन करने के लिए कहता है, जब तक वह अपनी पुस्तक को उसके बगल में रखेगा। उनकी पुस्तक यूसुफ ग्लेनविल द्वारा प्रसिद्ध कहानी बताती है एक गरीब ऑक्सफोर्ड छात्र के बारे में जो जिप्सी के एक बैंड में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। एक बार जब वह अपने समुदाय के भीतर डूब गया तो उन्होंने अपने व्यापार के रहस्यों को सीखा। थोड़ी देर के बाद दो विद्वान जिप्सी के ऑक्सफोर्ड सहयोगियों ने उन्हें पाया और उन्होंने उन्हें सीखने की पारंपरिक जिप्सी शैली के बारे में बताया जो शक्तिशाली कल्पना पर जोर देती है। उनकी योजना जिप्सी के साथ रहने के लिए जब तक वह सब कुछ वह कर सकता है सीखा था, और फिर दुनिया के लिए अपने रहस्यों को बताने के लिए नियमित रूप से कहने में अपने स्वयं के आश्चर्य को खारिज करते हुए। स्पीकर विद्वान जिप्सी की कहानी जारी रखता है। हर बार थोड़ी देर में लोग उसे बर्कशायर मौज में देखने का दावा करेंगे। स्पीकर उसे एक छायादार व्यक्ति के रूप में कल्पना करता है जो स्वर्ग से स्पार्क की प्रतीक्षा कर रहा है, जैसे पृथ्वी पर हर किसी की तरह है। स्पीकर भी दावा करता है कि विद्वान जिप्सी खुद को एक बार देखा है, भले ही उनकी कहानी पहली बार ऑक्सफोर्ड के हॉल के माध्यम से प्रतिध्वनित होने के 200 साल से अधिक हो गई हो। समय की उस लंबाई के बावजूद वक्ता विश्वास नहीं करता विद्वान जिप्सी की मृत्यु हो सकती थी, क्योंकि वह नश्वर आदमी के जीवन को त्याग दिया था। उन चीजों है कि मौत के लिए बाहर पुरुषों पहनने सहित दोहराया झटके, फिर से सबसे मजबूत आत्माओं की ऊर्जा निकास। जीवन की इस शैली को अस्वीकार करने के लिए चुना जाने के बाद विद्वान जिप्सी ऐसे झटके से पीड़ित नहीं होती है, बल्कि इसके बजाय बीमार, थकान, सुस्त, संदेह से मुक्त है। वह आधुनिक जीवन के खतरों से बच गया है जो धीरे धीरे जीव रहे हैं और पुरुषों को अजीब बीमारी जैसे नष्ट कर रहे हैं। वक्ता यह मानते हुए समाप्त होता है कि विद्वान जिप्सी इस बीमारी से पीड़ित हर किसी से बचते हैं, ऐसा न हो कि वह भी संक्रमित हो जाए। विश्लेषण। हालांकि यह कविता अर्नोल्ड के हस्ताक्षर विषयों में से एक निराशाजनक एकरसता और आधुनिक जीवन के परिश्रम की पड़ताल करती है, यह अद्वितीय है कि यह एक कथा के माध्यम से काम करता है। वास्तव में कविता में काम पर कहानी कहने के दो स्तर हैं, विद्वान जिप्सी की और उस वक्ता की जो उसे एक वचनाकृति से तैयार विचारों के साथ जूझ रहा है। कहानी के दोनों स्तर एक ही संदेश रिले करते हैं। विद्वान जिप्सी ने आधुनिक जीवन से बचने के द्वारा जीवन को पार कर लिया है, जैसा कि वह आमतौर पर करता है। अर्नोल्ड यहाँ आधुनिक जीवन की आलोचना करता है क्योंकि पुरुषों की सबसे मजबूत भी पहनती है। बीमारी शब्द की उनकी पसंद बता रही है, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि यह जीवन शैली संक्रामक है। यहाँ तक कि जो लोग आधुनिक जीवन से बचने की कोशिश करते हैं वे अंततः संक्रमित हो जाएंगे। इस तरह
कविता अनुरूपता के खतरों पर एक टिप्पणी करती है, क्योंकि इस संग्रह में अन्य कविताएं करती हैं। क्या विद्वान जिप्सी इतना शक्तिशाली बनाने के लिए वह आधुनिक जीवन से बचने के लिए चाहता है कि न केवल है, कई ऐसा करना चाहते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने उत्कृष्टता के लिए सामान्य समाज को पूरी तरह से अस्वीकार करने के लिए तैयार है। उस विचार में निहित थोड़ा निराशावादी विश्वदृष्टि है, क्योंकि वास्तविक व्यक्तित्व में आनंद लेना और अभी भी समाज का हिस्सा बनना स्पष्ट रूप से संभव नहीं है। विद्वान जिप्सी को ऑक्सफोर्ड पर पूरी तरह से अपनी पीठ को चालू करना पड़ा है, जो इस महान व्यक्ति बनने के लिए यहाँ सीखने और आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर भी कविता कुल मिलाकर अर्नोल्ड के कई कार्यों की तुलना में अधिक आशावादी है। ठीक है, क्योंकि यह सुझाव देता है कि अगर हम उस लागत का भुगतान करने को तैयार हैं तो हम पार कर सकते हैं। उनकी सभी प्रशंसा के लिए स्पीकर ने स्पष्ट रूप से दुनिया को अस्वीकार करने की ताकत को अभी तक पीड़ित नहीं किया है। सेटिंग उसकी विरोधाभासी भावनाओं को स्थापित करने में मदद करती है। कविता शांतिपूर्ण, शांत ग्रामीण जीवन की छवियों के साथ शुरू होती है। एक जगह जहां पुरुष हमेशा कार्य करते हैं, वे आधुनिकता के खतरों से अछूता रहे हैं। देहाती इमेजरी हमेशा प्रकृति के संपर्क में निर्दोषता और शुद्धता, अनफिल्टर्ड मानवता का एक प्रकार के साथ कविता में संबद्ध किया गया है। इस प्रकार के जीवन पर विचार करने वाले क्षेत्र में स्पीकर बाहर है। विद्वान जिप्सी के रूप में अभिनय करने की संभावना थी, और फिर भी वह ऑक्सफोर्ड के टावरों का भी अध्ययन कर रहे हैं, जो, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तेजी से बदलते, कड़ाई से संरचित दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जिसे विद्वान जिप्सी ने त्याग दिया था। अर्नोल्ड चतुराई से इस संबंध के माध्यम से स्पीकर की विभाजित प्राथमिकताओं को व्यक्त करता है। उसी समय है कि वह विद्वान जिप्सी की प्रशंसा करता है। वह पूरी तरह से आधुनिक दुनिया पर उसकी पीठ नहीं बदल सकता है। यह वही विरोधाभास है जो एक ग्रीष्मकालीन नाइट के स्पीकर को पीड़ित करता है। इस प्रकार कविता समग्र रूप से अर्नोल्ड के आंतरिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। उसकी इच्छा एक उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए, लेकिन पूरी तरह से समाज से बचने में असमर्थता। अपने जीवन में इस बिंदु पर अर्नोल्ड दुनिया की मांगों से अलग अलग दिशाओं में खींच लिया महसूस किया। वह आधुनिकीकरण के संक्रमण का विरोध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह फिर भी उस पर जीव रहा था, और अनुरूप होने का दबाव नकारात्मक रूप से अपनी कविता को प्रभावित कर रहा था। निस्संदेह अर्नोल्ड चाहता था कि वह विद्वान जिप्सी के रास्ते में बच सके। हालांकि ऐसा करने का सपना देखने के लिए वह जिम्मेदारियों से भी बंधे थे। The Scholar Gipsy, 1853, is a poem by Matthew Arnold, based on a 17th-century Oxford story found in Joseph Glanville's The Vanity of Dogmatizing, 1661. It has often been called one of the best and most popular of Arnold's poems. The original story. Arnold prefaces the poem with an extract from Glanville, which tells the story of an impoverished Oxford student who left his studies to join a band of gypsies, and so ingratiated himself with them that they told him many of the secrets of their trade. After some time he was discovered and recognized by two of his former Oxford associates, who learned from him that the gypsies had a traditional kind of learning among them, and could do wonders by the power of imagination, their fancy binding that of others. When he had learned everything that the gypsies could teach him, he said he would leave them and give an account of these secrets to the world. Stanza 1. Go, for they call you, shepherd, from the hill. Go, shepherd, and untie the wattled coats. No longer leave thy wistful flock unfed, nor let thy bawling fellows rack their throats, nor the cropped herbage shoot another head. But when the fields are still, and the tired men and dogs all gone to rest, and only the white sheep are sometimes seen, cross and recross the strips of moon-blanched green. Come, shepherd, and again begin the quest.
Here, where the reaper was at work of late. In this high field's dark corner, where he leaves his coat, his basket, and his earthen cruse. And in the sun all morning binds the sheaves. Then here, at noon, comes back his stores to use. Here will I sit and wait, while to my ear from uplands far away, the bleating of the folded flocks is borne, with distant cries of reapers in the corn. All the live murmur of a summer's day. Screened is this nook o'er the high, half-reaped field. And here till sundown, shepherd, will I be. Through the thick corn the scarlet poppies peep, and round green roots and yellowing stalks I see pale pink convolvulus in tendrils creep, and air-swept lindens yield their scent, and rustle down their perfumed showers of bloom on the bent grass where I am laid, and bower me from the August sun with shade, and the eye travels down to Oxford's towers. And near me on the grass lies Glanville's book. Come, let me read the oft-read tale again. The story of the Oxford scholar poor, of pregnant parts and quick inventive brain, who, tired of knocking at preferment's door, one summer morn forsook his friends, and went to learn the Gipsy lore, and roamed the world with that wild brotherhood, and came, as most men deemed, to little good, but came to Oxford and his friends no more. But once, years after, in the country lanes, two scholars, whom at college erst he knew, met him, and of his way of life inquired. Whereat he answered, that the Gipsy crew, his mates, had arts to rule as they desired the workings of men's brains, and they can bind them to what thoughts they will. And I, he said, the secret of their art, when fully learned, will to the world impart. But it needs heaven-sent moments for this skill. This said, he left them, and returned no more. But rumors hung about the countryside, that the lost scholar long was seen to stray. Seen by rare glimpses, pensive and tongue-tied, in hat of antique shape, and cloak of grey, the same the Gipsies wore. Shepherds had met him on the Hurst in spring, at some lone alehouse in the Berkshire moors. On the warm angle bench, the smock-frocked boors had found him seated at their entering. But, mid their drink and clatter, he would fly. And I myself seem half to know thy looks, and put the shepherds, wanderer, on thy trace, and boys who in lone wheat fields scare the rooks. I ask if thou hast passed their quiet place, or in my boat I lie, moored to the cool bank in the summer heats, mid wide grass meadows which the sunshine fills, and watch the warm, green muffled Cumnor hills, and wonder if thou haunts their shy retreats. For most, I know, thou lov'st retired ground. Thee at the ferry Oxford riders blithe, returning home on summer nights, have met crossing the stripling Thames at Bablock Heath, trailing in the cool stream thy fingers wet, as the punt's rope chops round, and leaning backward in a pensive dream, and fostering in thy lap a heap of flowers, plucked in shy fields and distant witchwood bowers, and thine eyes resting on the moonlit stream. And then they land, and thou art seen no more. Maidens, who from the distant hamlets come to dance around the Fifield elm in May, oft through the darkening fields have seen thee roam, or cross a stile into the public way. Oft thou hast given them store of flowers, the frail-leaved, white anemone, dark bluebells drenched with dews of summer eves, and purple orchises with spotted leaves. But none hath word she can report of thee. And, above Godstow Bridge, when haytime's here in June, and many a scything sunshine flames, men who through those wide fields of breezy grass where black-winged swallows haunt the glittering Thames, to bathe in the abandoned Lasher Pass, have often passed thee near, sitting upon the river bank overgrown. Mark thine outlandish garb, thy figure spare, thy dark vague eyes, and soft abstracted air. But, when they came from bathing, thou wast gone. At some lone homestead in the Cumnor hills, where at her open door the housewife darns, thou hast been seen, or hanging on a gate, to watch the threshers in the mossy barns. Children, who early range these slopes and late, for cresses from the rills, have known thee eyeing, all in April day, the springing pasture and the feeding kine, and mark thee, when the stars come out and shine, through the long dewy grass move slow away,
In autumn, on the skirts of Bagley Wood, where most the gypsies by the turf-edged way pitch their smoke tents, and every bush you see, with scarlet patches tagged in shreds of grey. Above the forest ground called Thessaly, the blackbird, picking food, sees thee, nor stops his meal, nor fears at all. So often has he known thee past him stray, wrapped, twirling in thy hand a withered spray, and waiting for the spark from heaven to fall. And once, in winter, on the causeway chill, where home through flooded fields foot travelers go, have I not passed thee on the wooden bridge, wrapped in thy cloak and battling with the snow? Thy face towered Hinksey and its wintry ridge, and thou hast climbed the hill, and gained the white brow of the Cumnor range, turned once to watch, while thick the snowflakes fall, the line of festal light in Christchurch Hall, then sought thy straw in some sequestered grange. But what, I dream, 200 years are flown since first thy story ran through Oxford halls, and the grave Glanville did the tale inscribe that thou wert wandered from the studious walls to learn strange arts, and join a gypsy tribe. And thou from earth art gone long since, and in some quiet churchyard laid, some country nook, where o'er thy unknown grave tall grasses and white flowering nettles wave, under a dark, red-fruited yew tree's shade. No, no, thou hast not felt the lapse of hours. For what wears out the life of mortal men? 'Tis that from change to change their being rolls. 'Tis that repeated shocks, again, again, exhaust the energy of strongest souls, and numb the elastic powers, till having used our nerves with bliss and teen, and tired upon 1,000 schemes our wit, to the just pausing genius we remit our worn-out life, and are, what we have been. Thou hast not lived, why shouldst thou perish, so? Thou hadst one aim, one business, one desire, else wert thou long since numbered with the dead, else hadst thou spent, like other men, thy fire. The generations of thy peers are fled, and we ourselves shall go. But thou possessest an immortal lot, and we imagine thee exempt from age, and living as thou livest on Glanville's page, because thou hadst, what we, alas, have not. For early didst thou leave the world, with powers fresh, undiverted to the world without, firm to their mark, not spent on other things, free from the sick fatigue, the languid doubt, which much to have tried, in much been baffled, brings all life unlike to ours, who fluctuate idly without term or scope, of whom each strives, nor knows for what he strives, and each half lives 100 different lives, who wait like thee, but not, like thee, in hope. Thou waitest for the spark from heaven, and we, light half-believers of our casual creeds, who never deeply felt, nor clearly willed, whose insight never has borne fruit in deeds, whose vague resolves never have been fulfilled, for whom each year we see breeds new beginnings, disappointments new, who hesitate and falter life away, and lose tomorrow the ground won today. Ah! Do not we, wanderer, await it too? Yes, we await it, but it still delays. And then we suffer. And amongst us one, who most has suffered, takes dejectedly his seat upon the intellectual throne, and all his store of sad experience he lays bare of wretched days, tells us his misery's birth and growth and signs, and how the dying spark of hope was fed, and how the breast was soothed, and how the head, and all his hourly varied anodynes. This for our wisest, and we others pine, and wish the long unhappy dream would end, and waive all claim to bliss, and try to bear with close-lipped patience for our only friend. Sad patience, too near neighbor to despair. But none has hope like thine. Thou through the fields and through the woods dost stray, roaming the countryside, a truant boy, nursing thy project in unclouded joy, and every doubt long blown by time away. O born in days when wits were fresh and clear, and life ran gaily as the sparkling Thames, before this strange disease of modern life, with its sickary, its divided aims, its heads overtaxed, its palsied hearts, was rife. Fly hence, our contact fear. Still fly, plunge deeper in the bowering wood. A verse, as Dido did with gesture stern,
From her false friends approach in Hades' turn. Wave us away, and keep thy solitude. Still nursing the unconquerable hope, still clutching the inviolable shade, with a free, onward impulse brushing through, by night, the silvered branches of the glade. Far on the forest skirts, where none pursue. On some mild pastoral slope. Emerge, and resting on the moonlit pales. Freshen thy flowers as in former years. With dew, or listen with enchanted ears. From the dark tingles, to the nightingales. But fly our paths, our feverish contact fly. For strong the infection of our mental strife. Which, though it gives no bliss, yet spoils for rest. And we should win thee from thy own fair life. Like us distracted, and like us unblessed. Soon, soon thy cheer would die. Thy hopes grow timorous, and unfix thy powers. And thy clear aims be cross and shifting made. And then thy glad perennial youth would fade. Fade and grow old at last, and die like ours. Then fly our greetings, fly our speech and smiles. As some grave Tyrian trader, from the sea, descried at sunrise an emerging prow, lifting the cool-haired creepers stealthily, the fringes of a southward-facing brow, among the Aegean isles, and saw the merry Grecian coaster come, freighted with amber grapes, and Chian wine, green, bursting figs, and tunnies steeped in brine, and knew the intruders on his ancient home, the young light-hearted masters of the waves, and snatched his rudder, and shook out more sail, and day and night held on indignantly, o'er the blue midland waters with the gale, betwixt the Syrtes and soft Sicily, to where the Atlantic raves, outside the western straits, and unbent sails. There, where down cloudy cliffs, through sheets of foam, shy traffickers, the dark Iberians come, and on the beach undid his corded bales,